Hello students, so today we'll start a new chapter and the name of the chapter is phrases and clauses. Let's begin the chapter. Chapter 10, phrases and clauses. Read the following sentences. Rohit hit a number of boundaries. Rohit hit a number of boundaries before he was caught. On his way back home from school, Ashwin stopped at the cloth market. While he was coming back from school, Ashwin stopped at the cloth market. They will meet you in the market. They will meet you when you go to the market. अब इन दी सेंटेंसेस द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन कलर, जो कलर में है वो फ्रेजेस और जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो क्लॉजेस। जितने भी वर्ड्स को हमने अंडरलाइन करा हुआ है इसमें वो क्लॉजेस हैं और जो वर्ड्स आपके हाईलाइटेड हैं वो आपके फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आर मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स बट दे डिपेंड ऑन अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर कंप्लीटिंग देयर मीनिंग। फ्रेजेस और क्लॉज दोनों मीनिंगफुल होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड, बट वो दूसरे पार्ट पर डिपेंड करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने। एक टेबल गिवन बिलो शोज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस और क्लॉज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि ये फ्रेज है, इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। फ्रेज का अकेले वो कुछ कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, जैसे कि इन द लास्ट आवर, अ मिनट अगो। क्लॉज क्या होता है, इट कैन मेक अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, लेकिन क्लॉज अपने आप में एक सेंस कंप्लीट बना सकता है। एग्जांपल, वेयर ही कुड स्लीप दैट द क्लॉक इज रादर स्लो। दूसरी चीज आती है, इट हैज नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कभी भी फ्रेज के अंदर ना ही सब्जेक्ट मिलेगा आपको ना ही प्रेडिकेट। विद लिटिल एफर्ट इन नो टाइम, सब्जेक्ट तो उसमें है नहीं, ना ही प्रेडिकेट है। सेकंड, इसका सब्जेक्ट भी होता है प्रेडिकेट भी। व्हेन द चाइल्ड गॉट वेट इन द रेन, इसमें सब्जेक्ट आपका चाइल्ड हो गया, रेन गॉट वेट इन द रेन। इट हैज नो फाइनाइट वर्ब, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता, जैसे क्रॉस द रोड साइड, इसका वर्ब फाइनाइट होता है, बिफोर यू गो टू द स्कूल। A main clause has all the features of the sentence and can stand alone as an independent। तो एक मेन क्लॉज होता है, उसमें एक सेंटेंस के सारे फीचर्स होते हैं और वो अकेले भी मीनिंगफुल बन जाता है। जैसे कि रोहित हिट अ नंबर ऑफ बाउंड्रीज, रोहित हिट अ नंबर ऑफ बाउंड्रीज। We know that a sentence is a group of words that contain a subject and a verb and makes complete sense। हमें पता है सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, प्रेडिकेट होता है और एक मीनिंग बनता है कंप्लीट। We also know that a sentence has two parts। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट, व्हाट वी स्पीक अबाउट इज द सब्जेक्ट, हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट। प्रेडिकेट होता है, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया वो हमारा प्रेडिकेट। अ फ्रेज में बी अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट। फ्रेज आपका सब्जेक्ट का भी पार्ट हो सकता है या फिर आपके प्रेडिकेट। A phrase conveys the meaning but not complete meaning, and this happens only when it is a part of sentence। फ्रेज कुछ मीनिंग को कन्वे करता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं बताएगा, और ये तभी होता है कि फ्रेज जो होता है वो हमेशा सेंटेंस का एक पार्ट होता है। एग्जाम्पल, द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर। तो आपका फ्रेज सिर्फ ये है इसमें, इन द ब्लू स्कर्ट। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द ब्लू स्कर्ट मीन समथिंग बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। अगर आप इसको अलग से निकाल के लिखोगे इन द ब्लू स्कर्ट, तो वो अकेले उसका कोई सेंस नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है उसके अंदर, ना ही कोई प्रॉपर प्रेडिकेट, so it is called a phrase। Read some more example। The water in the river was clean। अब how say in the river। Who has placed this painting on the wall? Earth revolves around the sun। Sun rises in the east। अब notice that the phrases in color in the above example have neither subject or nor a verb। अब जो phrases है इस example के अंदर ना ही उसमें subject है ना ही उसमें verb है। Like principal and subordinate clauses। Read the following sentence। The girl who is eating an apple is my friend। Girl, अब आते हैं प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज में। क्या है, जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दिया, गर्ल जो एप्पल को खा रही है वो मेरी फ्रेंड है। अब इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज बन रहे हैं। पहला होता है गर्ल इज माय फ्रेंड, प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब मेन क्लॉज। और हु इज ईटिंग एन एप्पल, जो एप्पल को खा रही है वो आपका सबऑर्डिनेट। रीड अनदर एग्जांपल। द फार्मर हु वर इन द फील्ड वर सोइंग। फार्मर्स जो फील्ड में है वो सीड्स को सो कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस और क्लोज कैसे सकते हैं। फार्मर्स वर सोइंग सीड्स,
एंड दे वर इन द फील्ड, दोनों चीजें हो रही है, तो इसमें दो सेपरेट सेंटेंसेस भी फ्रेम हो रहे हैं। सेकंड सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो टू सेंटेंसेस हैं इनको कंबाइन कर दिया गया ताकि एक सेंटेंस बन गया। तो फार्मर्स हु वर इन द फील्ड वर सोइंग सीड, तो फार्मर्स वर सोइंग सीड एक बन गया एंड दे वर इन द फील्ड। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज और द सेकंड क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड हु विच दैट। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचाना जाता है, उसमें हम वर्ड्स यूज करते हैं हु, विच, वेयर, व्हाई, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल इन एग्जाम, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। दिस सेंटेंस बिगिंस विद एन इफ क्लॉज, ये सेंटेंस हमेशा इफ क्लॉज से शुरू होता है। अगर एक इफ क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। रीड सम मोर एग्जांपल, इफ इट रेन्स दे विल नॉट गो आउट, अगर बारिश होगी वो बाहर नहीं जाए। Unless she returns, I shall wait here. Now, in these examples, if it rains and unless she returns, they are subordinate clauses. So they will not go out, and I shall wait here are principal and main clause. Now let's come to the worksheet. Underline the phrase in each of the following. अब इसमें हमें phrases को underline करना है. Children are playing in the playground. In the playground. My father is coming by the evening. By the evening. The teacher wrote a sentence on the blackboard. Puppies were running here and there. Here and there. Chocolate cake was topped with cream and nuts. With cream and nuts. Now, like this, you have to complete. Now, make sentences of your own using the phrases. अब हमारे पास phrase है, तो हमें उसका sentence बनाना है. Now we have to use these words to make a sentence. You can write here, the smell of freshly baked cookies were in the air. Outside the house, the boys are standing outside the house. At the bus stop, my aunt reached this at the bus stop on time. Like this, you have to use these phrases और उसमें sentences में उसका use होना चाहिए. Underline the subordinate clause in each of the following. अब इसमें हमें subordinate clause को use करना है. The car which I bought yesterday is only to which I bought. Woman who is wearing a red saree is my friend. To who is wearing. If you come late, we will miss the train. If you come late, we will miss the train. So if clause हो गया. If you go to the school late, you will be punished. The garden which has tall mango trees belongs to my uncle, which has tall mango. So like this, आपको इसमें subordinate clause underline करना है. Then comes add a subordinate clause to each sentence. Begin with the words given in brackets. अब हमारे पास bracket में words हैं, इनको use करके subordinate clause बनाना है. Like the man who is wearing a black coat is my uncle. Ravi is the boy who stood first in class. She came late because her bus was stopped in between. So like this, you have to complete the rest of the parts. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.